हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से तुम लोग के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉप एमसीक्यूज़ जो है वो पार्ट ए से है, दैट इज़ एंड इट कवर्स यूनिट 6, 7, 8 एंड 9। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Who is the present Secretary General of UNO? Option A, Antonio Guterres. Option B, Freigueli Lee. The correct answer is option A, Antonio Guterres. Next, question number 2. Which date is celebrated as United Nations Day? Option A, 24th October. Option B, 25th October. The correct answer is option A, 24th October. Next, question number 3. Who was the first woman president of the UN Assembly? Option A, Pratibha Devi Singh Patil. Option B, Vijaya Lakshmi Pandit. The correct answer is option B, Vijaya Lakshmi Pandit. And let me tell you one thing, that Vijaya Lakshmi Pandit, she was an Indian politician. Okay. Next, question number 4. How many members signed the UN Charter when it was set up? Option A, 50. Option B, 51. The correct answer is option B, 51. Next, question number 5. Following who are the permanent members of UN Security Council? Option A, USA, Russia, China, Britain and India. Option B, USA, Russia, China, Britain and France. The correct answer is option B, that is USA, Russia, China, Britain and France. And जो ऑप्शन ए में इंडिया था, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट इंडिया जो वो परमानेंट मेंबर नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. जाओ जाओ इज बेटर देन war war. Who made this comment? Option A, Winston Churchill. Option B, John F. Kennedy. The correct answer is option A, Winston Churchill. Next, question number 7. When did India become a member of UN? Option A, 1945. Option B, 1946. The correct answer is option A, 1945. Next, question number 8. Following which are the correct regarding UN's aims and objective? Option A, to prevent international conflict and war. Option B, to promote cooperation among states. Option C, to stop conflict developing into war. And option D, all of the above. So as we know that all of these three are correct, because the aims and objective of UNs to prevent international conflicts and war, to promote cooperation and among states, and also to stop conflicts developing into war. Next, question number 9. What is veto power? Answer: veto power is a negative power which is entrusted in the hands of the permanent members of Security Council. और ये जो वेटो पावर है ये एक नेगेटिव पावर होता है, और ये पावर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का 5 मेंबर जो उन लोगों का हाथ में होता है. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. राइट द नेम्स ऑफ 2 NGOs which are concerned with protection of human rights all over the world. Option A, Human Rights Watch and Amnesty International. Option B, WTO and WHO. The correct answer is option A, Human Rights Watch and Amnesty International. Next, question number 11. Mention the names of 2 agencies of the UN which deal with social and economic issues. Option A, UNESCO and WHO. Option B, World Bank and IMF.
So the correct answer is option A, UNESCO and WHO. And option B also correct, but agar compare kare, so that is option A is the most appropriate answer, that to this question. Okay, next question number 12. When was the Charter of UN signed? Question mark. By 2022, how many member states are there? Okay. Option A, 1945, and the member 193 members. Option B, 1946, 199 members. The correct answer is option A, 1945, 193 members. Next question number 30. What are the principal organs of the UN? Answer. Number 1, General Assembly. Number B, Security Council. Number C, Economic and Social Council. Number D, Trusteeship Council. E, International Court of Justice. And last one, that is Secretariat. Next question number 14. The UN Security Council has dash permanent and dash non-permanent members. Option A, 5 permanent and 15 non-permanent. Option B, 5 permanent and 10 non-permanent. So the correct answer is, as you all know, that option B is the correct, 5 permanent member and 10 non-permanent members. Question number 15. Where is the UN's headquarters located? Option A, Tokyo. Option B, New York City. The correct answer is option B, New York City. Next question number 16. In which year World Bank was created and where its headquarters located? Option A, 1945, Washington DC. Option B, 1945, California. Okay, so the correct answer is option A, 1944, Washington DC. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग द स्टूडेंट्स, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब दैट इफ़ यू राइट 1945 देन ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज एंड ऑल्सो इफ़ यू राइट 1945 देन ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अलग अलग बुक्स में इसका 1945 भी दिया हुआ है, 1944. सो इफ़ यू राइट 1944 ऑल्सो करेक्ट एंड 1945 ऑल्सो करेक्ट, एंड इट विल बी डिपेंड ऑन द एग्जामिनिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. What does G8 stand for? Answer. The G8, the group of 8 states, that means is made up of like Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia and USA and the UK. So ये जो 8 मेंबर हैं, इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम क्या बोला जाता है? G8 बोला जाता है. और ये जो G8 है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमोंग दिस स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. गेट स्टैंड फॉर एंड इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड in 1947, and option B, general agreement on tariffs and treaty 1995. So the correct answer is option A, General Agreement on Tariffs and Trade 1947. और ये जो गेट है, गेट को किसने रिप्लेस किया, ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक मेंशन किया था. दैट इज WTO. दैट मीन्स अभी गेट को हटा के मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यू नाम दिया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग UN एजेंसी is concerned with the safety and peaceful use of nuclear technology? Option A, the UN Committee on Disarmament. Option B, International Atomic Energy Agency. जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IAEA. So the correct answer is option B, International Atomic Energy Agency. Next question number 20. Which of the following is a traditional trait? Option A, global poverty. Option B, attack of a neighbor. The correct answer is option B, attack of a neighbor. It is a traditional. Next question. Write any one new threat to human security. Option A, global poverty. Option B, violent conflict. So the correct answer is
दैट ग्लोबल पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पर न्यू थ्रेट बोला गया, तो यू कैन राइट ग्लोबल पॉवर्टी एंड ऑल्सो लाइक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड इज ऑल्सो करेक्ट, कोई भी वन लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ईयर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइन, दैट इज इन शॉर्ट NPT. Option A 1955, option B 1968. The correct answer is option B 1968. Question number 23. Give an example of global threat. Option A terrorism, option B hegemony. The correct answer is option A terrorism. Next question number 24. Write the full form of BWC. Option A Biological Weapons Convention, option B Biological Weapons Contract. The correct answer is option A Biological Weapons Convention. And let me tell you one thing, that ये जो Biological Weapons Convention है, it was signatured in the year of 1972. Next question number 25. In which year was Kyoto Protocol signed? The Kyoto Protocol deal with which problem of environment? It is very important question. Option A 1997, and it is deal with climate change. Option B 2002, it deal with that global warming. So the correct answer is 1997, and the Kyoto Protocol that is deal with the climate change. Okay, so and one more thing, don't be confused. यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना, यहाँ पर ओनली काइटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था वो बोला गया. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर इंडिया साइन एंड रेटिफाई काइटो प्रोटोकॉल? So the option is 2002 and option B 2004. करेक्ट आंसर इज 2002. जब इंडिया बोला जाएगा तो वो 2002 होगा, और अगर ओनली काइटो प्रोटोकॉल बोलता है तो फिर योर आंसर विल बी 1997. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. क्वेश्चन नंबर 26. नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड डैश और डैश. Option A human security, global security. Option B human rights or global poverty. The correct answer is option A human security or global security. Next, question number 26. Give example of two health epidemics. Option A bird flu and hantavirus. Option B malaria and fever. So the correct answer is option A bird flu and hantavirus. Next question number 20. I think it should be 27. Okay, it's okay. Just question को follow करो, number थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया शायद. Okay, what is pollution and what are the different types of pollution? Answer: pollution is defined as the unfavorable alternation of our surroundings. So there are different types of pollution, like air pollution, water pollution, and soil pollution, and many more. But if arise question for 2 marks, then you can write any two: air pollution or water pollution or soil pollution. Next question number 27. Write two difference between migrants and refugees. Answer: Number 1. Migrants are those who voluntarily leave their home countries, and whereas refugees are those who flee for war, natural disaster, or political persecution. Sorry. सो बेसिकली माइग्रेंट्स किसको बोला जाता है? जो कि वॉलेंटरी अपना कंट्री को लीव कर छोड़ के आता है. और रेफ्यूजीज हम किसको बोलते हैं? जो लाइक नेचुरल डिजास्टर या फिर पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से उनको छोड़ना पड़ता है. एंड डिफरेंट लाइक डिजास्टर लाइक नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ऑल्सो लाइक अर्थक्वेक की वजह से जो लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हैं, उन लोगों को हम रेफ्यूजीज बोलते हैं. एंड नेक्स्ट डिफरेंट नंबर 2 जो डिफरेंट है वो है migrants are not accepted by the state but states are supposed to be accept refugees. जो migrants है उसको स्टेट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, मतलब एक्चुअली स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता है, बट जो रेफ्यूजीज है उसको स्टेट जो है स्टेट एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब क्योंकि वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करके दूसरा जगह पे आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. राइट टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. Answer: Number 1. Traditional notions of security are principally concerned with the use or threat of
use of military force, but non-traditional notions of security go beyond military threats and dangers. And next difference, in traditional security, force is the principal threat to security as well as the principal means of achieving security. But non-traditional conception of security includes like human security and global security. Next question number 29. How many states attended the Art Summit of 1992? Your option is option A 1970, option B 2000 200. The correct answer is option A 1970. Next question, where was the Art Summit 1992 held? Option A Rio de Janeiro, Brazil. Option B Japan. Correct answer is option A Rio de Janeiro, Brazil. Next question number 31. Write the full form of UNEP. Option A United Nations Environment Program. Option B United Nations Art Program. The correct answer is option A United Nations Environment Program. Next question number 32. In which year was the UN Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, held? Option A 1990, option B 1992. The correct answer is option B 1992. Next question number 30. It should be 33. It's okay. Rio Schmidt recommended a list of development practices called Agenda 21. Option A, is it yes or no? मतलब yes and no में आंसर देना है. तो yes, it is true that Rio जो recommended, जो लिस्ट जो रिकमेंडेड किया था उस वो एजेंडा जो है था वो 21. इट इज़ लाइक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट प्रैक्टिस, और उसको क्या बोला जाता है मतलब उस लिस्ट को, दैट इज एजेंडा 21. ओके. नेक्स्ट, इन विच ईयर द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडाइजिनियस पीपल्स वेयर was formed? Sorry, the question in which year the World Council of Indigenous Peoples were was formed? I think grammatically it's okay. It was formed. The option is 1975. Option B 1785. Also option it's okay. The correct answer is option A 1975. And let me जो B option B है उसको थोड़ा छोड़ दो. ये 70 नहीं होना. It should be 1985 एक्चुअली टाइप करना चाहिए था, बट इट्स ओके. करेक्ट आंसर में आते हैं हम लोग. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1975. दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट. एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंडाइजिनियस पीपल है इसका आंसर ये फॉर्म एक्चुअली 1974 में भी अलग अलग बुक्स में 1974 भी दिया हुआ है. तो इफ़ यू राइट 1974 ऑल्सो करेक्ट एंड 1975 इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ इट विल बी डिपेंड ऑन अगर ऑप्शन आता है तो. ओके. नेक्स्ट question number 36. Which day is celebrated as Environmental Awareness Day? Option A 5th June, option B 5th September. So the correct answer is, as you all know, that 5th June. Okay. Next question number 37. Give two examples of global commons. Option A Antarctica and outer space. Option B trees and business. So the correct answer is option A Antarctica and outer space. Next question number 28. The Stockholm Conference was held in the year dash. Option A 1972, option B 1982. So the correct answer is option A is the correct, that is 1972. Next question number 39. What do you mean by greenhouse gas? Answer. A greenhouse gas is a gas that absorbs and emits infrared radiation, and they absorb infrared energy, that is called heat energy, emitted from the earth's surface and re-radiates it back to the earth's surface. It's considered as a ग्रीन हाउस. इसको ही ग्रीन हाउस बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड ये जो गैस ये बहुत ही लाइक हानिकारक होता है मतलब. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. What is mean by resource geopolitics? Mention two resources which are relevant for global politics. Answer.
Resource geopolitics is the geographical political affairs which is concerned with the allocation and distribution of natural resources among the nation of global arena. And two resources which are relevant for global politics are, one is oil and another one is water. Next question, number 41. Technology is one of the most important factors that causes globalization. Is it true or false? That is yes or no. So the correct answer is yes. टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्लोबलाइजेशन का. ओके, मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991. So you all know that answer, correct answer is option B, 1991. Next question number 43. Write the full form of WSF. Option A, World Social Forum. Option B, World Society Forum. The correct answer is option A, World Social Forum. Next question number 40. Okay, it should be 44. It's okay. Where and when was the first meeting of World Social Forum, that is in short WSF, held? Option A, that is a Port Alegre, that is in Brazil 2001. Option B, Mumbai in 1998. So the correct answer is option A, that is a Port Alegre, that is in Brazil 2001. Next question is 44. What are the different dimensions of globalization? Very, very important. So you all know the answer, that economic dimension, political dimension, and cultural dimension. And next, even ecological dimension also as well. Okay, next question number 45. Mention the name of two organizations that is related to the process of economic globalization or globalization. सो यहाँ पर क्वेश्चन दो अलग अलग ऐसा आ सकता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भी आ सकता है या फिर ओनली ग्लोबलाइजेशन, बट द आंसर विल बी द सेम, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड IMF. यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. राइट टू कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Number 1, development in the field of science and technology. Number 2, revolution in information technology and electronic media. 1940. Next question. What is liberalization and privatization? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी लिबरलाइजेशन आता है 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी प्राइवेटाइजेशन आता है. सो इस बार एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. लिबरलाइजेशन क्या है या फिर प्राइवेटाइजेशन क्या है, 2 मार्क्स के लिए भी दे सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी. It's okay. So the liberalization is the process or means of the elimination of control of the state over economic activities. That means जो liberalization है ये एक process होता है, ये एक process है जो कि state का कंट्रोल, स्टेट का जो कंट्रोल है उसको थोड़ा सा लिमिट कर देता है ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड इट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस एंटरप्राइज प्राइसेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. और ये इसमें इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा किसका होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेज जो है उन लोगों का. और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा एलिमिनेट कर देता है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन. What is privatization? It is also a features of globalization. Privatization, it means that the transfer of ownership, management, and control of the public sector enterprises to the private sector. And next question number 48. Write to cultural consequences of globalization. Very, very important for in this final exam. Number 1, that external influences simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditional. And 2, next consequences, that is globalization broaden our culture outlook and generates culture homogenization, make culture and more different and distinctive. क्योंकि अभी जो कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है हमारा नाउ इन प्रेजेंट सोसाइटी में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. Right to political consequences of globalization. Yes, due to globalization क्या हुआ, globalization results like erosion of state capacity,
and number two, that is जो हमारा welfare state है, that is the world welfare state is now giving way to a more, that minimalist state. Okay, and next question is like, write two features of globalization. So there are so many features then, but you can write any of your choice, but I mentioned only two, that is global. Number one is global economy, because global economy is very important. And number two, that is establishment of worldwide institution, and because of this यही globalization का एक important features है, जो और वर्ल्ड वाइड में अलग अलग different institutions, for example like MNC, multinational companies. Okay, so with that our discussion is over. So this 50 question is very important for final. तो वाइजली तुम लोग ये कॉपी में नोट्स कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले सकते हो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, इसमें से क्या है कि अगर ये 50 क्वेश्चन को कवर करोगे, आई एम श्योर कि एटलीस्ट दैट 80% कॉमन या फिर 85% कॉमन इसमें से आएगा. तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट बी है, अभी G2 पार्ट ए कंप्लीट हो गया हम लोग का, और पार्ट बी में मैं न्यू और दैट इज़ तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1 and 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा. वो भी 5 यूनिट को डिवाइड करके 2 वीडियो बनाऊंगा मैं. अच्छा, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट्स इसमें से मैंने अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस किया, बाकी और जो ब्रॉड क्वेश्चन है उसका सिर्फ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा विद इन द 2 days इट विल बी अपलोडेड. ओके, सो टिल नाउ बाय, थैंक यू सो मच. Okay, and please if you like my video, then try to share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.